Assalamualaikum students. My name is SALMAN. I am a student of first year MBBS, currently studying in LUMHS. I had appeared in PMC Mdcat that was conducted by PMC in year 2020, and I managed to get 170 marks out of 200. My district merit was first, and my background for intermediate, I was from A levels, and I also done O levels from Hyderabad. In this session, I will be discussing about the syllabus that was announced by PMC for Mdcat 2021. So the students who are going to appear for Mdcat 2021, it would be great helpful video for them, and I would be great emphasizing on the syllabus, how to read the syllabus, what are the contents in the syllabus, and how to manage your timetable in these remaining days. So let's discuss it. So here is our PMC Mdcat 2021 syllabus. So we would be discussing each and every aspect of this syllabus. So let's discuss it. This is a table of contents. Let's get to the section number 2, that is about the structure, weightage and difficulty levels. First of all, as you can see here, the total number of MCQs that are 210. In 2020 Mdcat, the total number of MCQs were 200. So 10 additional MCQs has been added in this Mdcat of logical reasoning, as you can see in this table. So duration of Mdcat is 3.5 hours. Format, computer based MCQs. This is the major changing. In 2020 it was physical, now it is on computer. Minimum pass marks is 65% and there is no negative marking. Let's come to the weightage. What is mean by weightage and percentage? Biology, weightage is basically the percentage of questions that are coming for a particular subject in the paper out of 210. Such as biology has 68 MCQs out of 210. So the percentage of questions coming for the biology is 32. While for chemistry and physics is 26.5%, means 56 MCQs, 56 and 56. For English, these are 20 and 10%. Logical reasoning are 10 MCQs. So the major area that we should have concentration on are the biology, chemistry and physics. MCQs total are 210. Now, there is one advantage for computer-based MCQs. Mostly, students are more panic about the MCQs for the problem-based questions, such as in physics. While as you know that in Mdcat there is no usage of calculator to calculate any problem or solve any calculation, mathematics-based calculation. So on computer-based, since this is not physical, so there would be straight questions, straight theoretical questions, no problem. Less problem would be there. So there are less chances for problems based MCQs. So this is the advantage. So here now come to the difficulty level of MCQs. What is the difficulty? There are 3 difficulty levels: easy, moderate and hard. The percentage for MCQs that are easy will be 20%. 20% MCQs will be easy. 60% will be moderate. 20% will be hard. What you mean by easy, moderate and hard? Basically in hard and some part of moderate forms the 30% MCQs that will be application level, means that will be understanding level. 30% of the MCQs will be understanding level. So you should have a concept of each and every subject to come to solve these or to do these types of MCQs. 30%, while 70% will be recall.
In these types, 70% majority of the questions are recall. What do you mean by recall? It is basically the MCQ that are taken from the book, not taken from the exercise that are written on the book. These are not MCQ. In I am saying in this sense that if we are studying the enzyme chapter, for example, if we are studying the enzyme chapter, and here the MCQs comes, it says what is the name of the enzyme for this reaction. So these type of question will be recall. The name of enzyme, what is the definition, will be definition based and name based. These are the 70% question. That will be easy, totally easy. While 30% will be understanding level. You should have a concept for each and every subject to have to come to do these types of MCQs. So now come to the section number 3, that is for biology. Here you can see content is for biology. This is combined for the intermediate and first year. There are 13 chapters for biology. Now come to the learning objective. These is the main thing for a student to study in the syllabus. Let's take the first one, biodiversity as cellular. This is the main chapter. Sorry, this is the chapter we are discussing. So in this chapter, there are 4 subtopics. Mean if this is biodiversity chapter, it is written in your books, biodiversity. Now, which topics you should cover? These are written here. That are only 4 topics you should cover from the biodiversity chapter. Now, what most of the students do, they open the chapter of the biodiversity and read the whole chapter whether the topic is present or not in the syllabus. They are studying each and everything from the biodiversity. You should not do this. The best way to learn these topics is by observing in the syllabus, such as if we are reading or learning the biodiversity, you should only emphasize on the topics that are classification of virus, discovery of virus, structure of viruses, and viral disease. These are the main topics that you should cover. And every extra thing that is written on the book that is out of the syllabus, that is not written in the syllabus, you should not do this. So these are what are the learning objectives. These are the subtopics for this topic. What are the learning objectives? Learning objective basically is a term used to describe a student, what student should able to tell to the examiner after reading this topic. What a student should know or what a student should have knowledge of after reading these topics or this chapter. These are the trace the discovery of virus, classify viruses on basis of their structure, number of different disease, etc. Identify symptoms, mode of transmission, and causes of viral disease. These are the learning objectives that a student should know after reading these topics. तो यहाँ पर जो दिया हुआ है हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, हमें सिर्फ यही चीज़ें आनी चाहिए. अब यहाँ पर जो लिखी हुई है हमें उतना ही पढ़ना है जितना यहाँ लिखा हुआ है. उससे ज़्यादा पढ़ेंगे हमारे जहन में फिर एक्स्ट्रा चीज़ें सवार हो जाएंगी और वो हमें मेन चीज़ से हटा देंगी. तो इस तरीके से सिलेबस को रीड किया जाता है कि यहाँ पर देख लिया फर्स्ट चैप्टर देख लिया, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, हमें यही टॉपिक्स कवर करने. अब इन टॉपिक्स में हमें क्या चीज़ आनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस में हमें क्या आना चाहिए, वो हमें आना चाहिए भाई क्लासीफाई ऑन द बेस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ स्ट्रेन, डिजीज और कॉस्ट. बस ये चीज़ें आनी चाहिए हमें. ये पढ़ लिया हम. तो इस तरीके से सिलेबस को पढ़ा जाता है. दूसरी चीज़ यहाँ पर एक और डिस्कस करता चलूँ, that is about these type of chapters such as diversity among animals, the kingdom Animalia, kingdom Plantae. Kingdom Plantae is totally excluded from the syllabus. So what most of the students do regarding these 6 chapters that are belong to kingdoms, they read the whole book that comprises
half of the book. So that is not needed. Reading whole half of the book is not needed for these chapters. मतलब पूरी की पूरी बुक्स तकरीबन आधी बुक होती है इन 5 चैप्टरों पे, और ये 5 चैप्टर किसी इस सिलेबस में देखा जाए तो किसी काम के नहीं। अब देखें यहाँ पर, तो डाइवर्सिटी अमंग एनिमल किंगडम एनिमलिया का हमें क्या चीज़ आनी चाहिए सिर्फ, तो इसमें देखा जाए तो हमें इतनी चीज़ें नहीं पढ़नी है, 6 के 6 चैप्टर रटने नहीं है, हमें सिर्फ ये चीज़ कवर करनी जो इन्होंने दिया हुआ है। इतनी सी चीज़ है, इतना लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, बस ये चीज़ आनी चाहिए। और यकीन करें कि पिछले टेस्ट में किंगडम एनिमलिया या किसी भी किंगडम का कोई सवाल नहीं आया था, आया था तो 1-2 आया था, वो बिल्कुल ईजी और कोई भी बता सकता है। तो बजाय इन 6 चैप्टर्स पे टाइम ज़ाया करने के हमें दूसरे चैप्टर्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये हो गया हमारा बायोलॉजी सेक्शन। इससे तो इस तरीके से हमें बायोलॉजी पढ़नी है। इसी तरीके से केमिस्ट्री में इन्होंने दिया हुआ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स वगैरह, अब ये टॉपिक्स हैं, तो अब इन टॉपिक्स में हमें क्या चीज़ आनी चाहिए वो हमें पढ़नी है। ये मैंने बता दिया लर्निंग ऑब्जेक्टिव वगैरह का, ठीक है। फिज़िक्स मोस्ट कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट होता है। अब इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर तो हमें टीचर्स भी ये करते हैं कि हमें रटवा देते हैं, कोई भी फार्मूलेस होते हैं, फार्मूलाज वगैरह होते हैं। तो फिज़िक्स में ऐसा नहीं है, फार्मूला रटना कोई इसमें नहीं होता इतना। इसमें बेसिकली फार्मूला हमें बनाना आना चाहिए, ड्राइव करना आना चाहिए। हमने जो किया था, जैसे फिज़िक्स पढ़ी थी, अगर सामने फार्मूले लिखे हुए थे हम उनको नहीं देखते थे, हम देखते थे कि किस तरीके से ड्राइव हो रहा था, उससे कॉन्सेप्ट बनता है और इजी होती, भूलते नहीं है फिर फार्मूले भी, कभी कभी नहीं भूलेंगे फिर अगर इस तरीके से पढ़ेंगे। यही लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं, इधर इन्होंने ज़्यादा बताया हुआ है लॉजिकल रीजनिंग का, ये रहा इधर इन्होंने बताया हुआ है। लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन बेसिकली ये एक तरीके के क्वेश्चन होंगे, पैसेज दिए हुए होंगे हमें, तो उसमें से क्रिटिकल थिंकिंग होती है, मतलब एक थिंकिंग को टेस्ट करते हैं, हमें हमारी स्किल्स को टेस्ट करते हैं, ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो ये कोई आईक्यू लेवल क्वेश्चंस नहीं होंगे, ये एक तरीके से लॉजिकल डिडक्शन एक होते हैं कि किसी चीज़ को पढ़ा तो उससे क्या चीज़ आनी चाहिए, मतलब उसकी स्किल पूछेंगे, उससे थिंकिंग पूछेंगे कि अगर कोई कंडीशन दे दी तो हमें उस कंडीशन को किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। तो इस टाइप के एमसीक्यूज होंगे। तो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ भी कि किस तरीके से एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो यह हम पढ़ सकते हैं। तो ये था पीएमसी के सिलेबस के हिसाब से हमने डिस्कस किया पीएमसी के सिलेबस को किस तरीके से पढ़ना चाहिए। अब हमें क्या करना है, इन कुछ दिन बचे हुए दिनों में जो हमारे बचे हैं टेस्ट में, तो हमें सिलेबस की रिवीजन करनी, क्योंकि अब जो है पढ़ने का टाइम नहीं है, अब कॉन्सेप्ट बनाने का टाइम नहीं। कॉन्सेप्ट जो बनना था वो पिछले महीनों में बनाना था, अब नहीं बनाना वो, अब जो हो गया सो हो गया। अब जो हमें देखना है कि हमारे 15 दिनों में हमें टाइम टेबल डिज़ाइन करना है। किस तरीके से टाइम टेबल डिज़ाइन करना है कि हमारे 3 मेजर सब्जेक्ट्स हैं, तो हमें उनको डिवाइड करना है। अगर 15 दिन है फॉर एग्जांपल, तो 15 दिन में से 5 दिन हम बायो को दें, 5 दिन केमिस्ट्री को दें, 5 दिन फिजिक्स को दें। अब 5 दिन में इनको डिवाइड करो और 5 दिन में इनको कंप्लीट करो, रिवीजन कंप्लीट करो इनके, क्योंकि आपने अगर पास पेपर्स कर लिए हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो अब क्या करना है, हमें रिवाइज करना है खाली, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट बनाना मुश्किल है इतने से टाइम में। तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना। रिवीजन भी किस तरीके से, पीएमसी के सिलेबस को सामने रखते हुए बस उसे रिवीजन करना है, और पीएमसी के सिलेबस को ही देख देख के हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं, भले वो फेडरल में से हो या सिंध में से हो। अगर फेडरल से पढ़ते हो तो वो भी अच्छा है, वहाँ पर कॉन्सेप्ट ज़्यादा बनेगा। तो ये हमने बता दिया कि किस तरीके से तुम टाइम मैनेज कर सकते। और टाइम की बात करें तो 3.5 घंटे बहुत होते हैं, 3.5 घंटे आराम से बहुत हो जाएगा, क्योंकि 210 MCQ 3.5 घंटे में आराम से होते हैं, क्योंकि मोस्टली 80% MCQ जो होंगे ईजी और मॉडरेट होंगे, वो हमें देख कर ही पता चल जाएगा। 20% हार्ड है जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये थे हमारी
इस सेशन का कंक्लूजन। Hope you find this video very helpful for your preparation of Mdcat 2021. We wish you best of luck for your future exams. If you feel any kind of difficulty during your preparation, you can contact us at any time. Thank you for watching. We'll see you in next video. Allah Hafiz.